Okay. Good morning, all of you. Hello, hello. Yeah. So today we are going to deal with psychology of terrorist. So the pattern that we are going to follow here is that we are first of all going to define who is a terrorist. Okay. Or what is the definition of terrorism? Once we get to know that who is a terrorist, then we will investigate that who. Okay. So whatever terms comes in the definition of terrorism, we will investigate each of those key terms from psychology point of view. Please come. Got it? Now, I'm presenting you a research paper of Emile Brinu. A research paper given by Emile Brinu. On terrorism. Yeah, online students. Am I audible, visible properly? Okay. Are we too early to begin the class? Okay. Please come, please come. I will start the class in another 1 minute, huh? Because people are joining, I can see that. अभी पता है क्या है, सिर्फ हम लोगों का ऑप्शनल का क्लास चल रहा है साइकोलॉजी का. सोशियोलॉजी खत्म हो गया, इकोनॉमी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, और बाकी कोई ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है. वो सब पीटी के बाद होगा. पीटी के बाद 1 महीना क्लास होगा उनका. यू आर लकी कि मैंने पुश किया 2 दिन का एक्स्ट्रा क्लास कि मैं इनको कंक्लूड करके ही भेजूंगा. मैं पीटी के बाद तक रुका के नहीं रखूंगा किसी बच्चे को. आई विल नॉट होल्ड एनी चाइल्ड आफ्टर पीटी. ठीक है, तो हम लोग मंडे को कंक्लूड कर रहे हैं. तो राइट नाउ ऑप्शनल का एक ही क्लास चल रहा है हम लोगों का. ठीक है, तो आप देखेंगे पूरा सन्नाटा है चारों तरफ. आ जाओ, कहाँ थे तुम लोग? मेट्रो आ गया. देखो मैंने सही किया ना, अभी शुरू नहीं किया. देखो सब लोग आ गए. मेट्रो आता है ना तो ग्रुप में लोग आते हैं. ये भाई साहब तो कहाँ ट्रेन से आते हैं? सोनीपत से आते हैं. सही है. 40 किलोमीटर, 60. Okay, I'll start in another 1 minute.
Okay, come back, everybody. So I was telling the class that we are going to investigate terrorism on the basis of research paper submitted by Emile Brinu. What approach he has taken that makes me admire him? He has first of all seen the definition of terrorism. How do we define a terrorist? Okay. So he has started with definition of terrorism, and whatever are the keywords in the definition, he has done psychological research on those keywords to identify the exact psychology of a terrorist. And you know what? Anyone can become terrorist. Under life circumstances, anyone can become terrorist. So terrorists are not born in heavens, or they are not manufactured with different blue chips. They are just people like you and me. Only thing is, they are in that circumstance. If we also get into those circumstances, we stand a chance of becoming a terrorist. And once we become a terrorist, now it depends upon our leadership qualities, that how good or how deadly we become a terrorist. Okay. Somebody who has good leadership can lead the terror outfit, just like a businessman leading a business group. Are you getting it? So there are not much differences between a terrorist and a common man, except for certain circumstantial factors. Okay. So we will not only look at the circumstantial factor, but we will look at the human factor that responds in a typical way to those circumstances. Okay. So there are two key elements in the definition of terrorism. There are two key elements in the definition of terrorism. Without these two key elements, we cannot term an act of violence as act of terror. ठीक है, ये दो की एलिमेंट अगर नहीं है तो मैं किसी भी हिंसा के वारदात को टेररिज्म नहीं कह सकता. ठीक है. फर्स्ट एलिमेंट इज it involves a group ideology. It involves a group ideology. So I have underlined two keywords, group and ideology. So therefore an individual cannot become terrorist. Okay? An individual committing violence cannot be termed as terrorist unless and until he is member of a group. Okay? So you can write, individuals may attack, terrorize, kill or threaten others. An individual may attack, terrorize, kill or threaten others. But if they are not a part of a group, or motivated by a group ideology, then by definition, they are not terrorists. So if an individual is not part of a group and is not motivated by any ideology, we cannot call that person a terrorist. Say, for example, a cartel member, a drug cartel member can behead other people. We cannot call him terrorist because he is not motivated by any ideology. Okay? There has to be an ideology.
Of course, the ideology is bogus, hollow, shallow, but there has to be an ideology. ठीक है? तो इस टेरर आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजिकल रेटरिक भी कहते हैं. आइडियोलॉजिक रेटरिक का मतलब होता है दिखावा, टू हाइड समथिंग दैट इज योर वीकनेस. यू प्रेजेंट द डिवाइन पावर by whatever name you call him. You present a mask that I am fighting in the name of this divine power. There is an ideology. Although the ideology is bogus, it is called ideological rhetoric. But there has to be an ideology. तो ड्रग कार्टेल मेंबर का क्या है कि अगर उनका सिस्टम क्या है ड्रग कार्टेल्स का, अगर ड्रग की कोई चोरी किया, अगर 5 ग्राम भी कोकेन चुरा लिया कोई, तो कहने का मतलब 5 ग्राम कोकेन का बहुत मार्केट प्राइस होता है, वो लाखों का आता है. तो उस प्रैक्टिस को होने नहीं देना आगे. तो जिसने भी चोरी किया है, इनका वसूल है कि वो दुनिया के किसी कोने में रहे, उसको ढूंढेंगे और उसको बहुत बुरी तरीके से पब्लिकली मारेंगे, और ऐसे मारेंगे कि बाकी मेंबर ऑफ द कार्टेल शुड नो दैट ही वाज किल्ड इन दैट ब्रूटल मैनर. अगर किसी ने 50 किलो चोरी कर लिया तो सिर्फ उसे ही नहीं मारेंगे, उसके पूरे परिवार को मारेंगे और पब्लिकली मारेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि आइंदा से कोई चोरी ना करे. ये उनका नियम है. ठीक है? दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसीजर. देयर इज नो आइडियोलॉजी. इट इज जस्ट टू क्रिएट दैट फियर एलिमेंट. सो इफ यू लुक एट द ड्रग कार्टेल्स वायलेंस which they do with their own group member, it is much more terrorizing as compared to what a terrorist does. ठीक है? अब पैब्लो एस्कोबार को देख लो, उससे बड़ा टेररिस्ट कौन हो सकता है? अपने जीवन काल में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों को मारा है उसने. 2000 से ज्यादा पुलिस वालों को मारा है. अब बताओ, राष्ट्रपति को मार दिया कोलंबिया का, सुप्रीम कोर्ट को पूरा उड़ा दिया बम से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना था उसके खिलाफ. 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मार दिया उसने. एंड देन ही ऑफर्ड सरेंडर. बोला सरेंडर मैं करूंगा, लेकिन जेल मेरा अपना होगा, जेल के गार्ड्स मेरे अपने होंगे, 3 किलोमीटर के दायरे में कोई फौज नहीं होगी, मिलिट्री नहीं होगी, और मेरे जेल के ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजरेगा. ये तो भैया अच्छा सरेंडर. ठीक है? और जेल उसने बनवाया. उसे लगे कुछ साल जेल बनवाने में. उस जेल में स्विमिंग पूल, 5 स्टार होटल के फैसिलिटी, सब कुछ. जेल किया वो अपने घर में ही था. आर यू गेटिंग इट? तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसको टेररिस्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज ही वाज नॉट फॉलोइंग और चेजिंग एनी आइडियोलॉजी, ही वाज जस्ट चेजिंग हिज पर्सनल इंटरेस्ट. आर यू गेटिंग इट? नाउ second element of terrorism, so you can say a drug cartel can also behead people, but cannot be called a terrorist because he is not driven by any ideology, because he or she is not driven by any ideology. she भी जोड़ना जरूरी है. One of the Mexican drug cartel was headed by a female. ठीक है? Mexico lies in south of North America. She was known as Queen of South. ठीक है? तो लड़के क्या, लड़कियां भी ड्रग कार्टेल में हैं. सेकंड, मैंने ड्रग्स नहीं लिया कभी लाइफ में, ये अफसोस रह गया. I did not try. Terrorism is defined by use of violence. Terrorism is defined by use of violence in the service of the group. In the service of the group.
terrorism is defined as use of violence in the service of the group ideology. Now see the key word: indiscriminating, indiscriminating, indiscriminately over not only combatants but also non-combatants. Not only combatants but also non-combatants. So here the key word is indiscriminately, without any discrimination. Now this is a central difference between a soldier and a terrorist. A soldier discriminates while serving violence. He serves violence only to combatants. He does not fire or shoots the civilians. But terrorist, see the principle of equality. He does not discriminate. Whether you are combatant or non-combatant, whether you are child or old or women or female और बीमार मजबूर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पेशेंट को भी हॉस्पिटल के अंदर घुस के कैंसर वार्ड में, कामाठ हॉस्पिटल में थड़थड़ा के मार दिया सबको. बोले ऐसे ही मरना है, मुक्ति दे दिया उसने. ठीक है. So indiscriminate violence in the service of group ideology. So terrorists never discriminates between combatants and non-combatants. Combatants are security forces. Non-combatants are children, civilians, etc. Okay? Now you keep on thinking that how can a human being fire at a child? कैसे? Human being है, कैसे कर रहा है? Without any guilt. Yesterday we saw the example of Chris Kyles. He suffered from depression due to guilt, and he was guilty of killing 2 terrorists, one 10-year-old boy and her mother and his mother, and then also he suffered guilt. Why these people don't have guilt? What could be the reason? Is there something different happening in their brains? So we will investigate by neuroimaging techniques as well. कि भाई उनके दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा चल रहा है, कैसा कर रहे हैं. Are you getting it? आपको गुस्सा है, आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, गुस्सा आया थप्पड़ मारा, आप बिना सोचे समझे मारते हैं, कितना प्रेशर दे रहे हैं. लेकिन अगर एक बच्चे पे गुस्सा है तो आप जब थप्पड़ मारते हैं तो हाथ रुक जाता है और आपका थप्पड़ ऐसा जेंटल हो जाता है. ये ह्यूमन टेंडेंसी है. इट्स नेचुरल रिएक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट वी आर कंपैशनेट टुवर्ड्स चिल्ड्रन. वेयर हैज दैट कंपैशन गॉन? व्हाई इट इज नॉट कमिंग विद इन दैम? ठीक है. वी विल इन्वेस्टिगेट दैट प्रोसेस आल्सो इन द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. सो वी विल डील विद 3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म. I will begin those questions. Okay? To know why and how an individual, to know how and why an individual engage in indiscriminate violence, how an individual supports and engage in indiscriminate violence driven by a group ideology, we have to examine the 3 processes. We have to examine the 3 processes. ये इंडिस्क्रिमिनेट वायलेंस क्यों होता है, इसके लिए 3 प्रोसेस का जानना जरूरी है. How does our brain responds
to a group? How does our brain responds to a group? How does, second question, how does our brain condones or initiates? How does our brain condones or initiates act of indiscriminate violence? Both factors, condone or initiate. When do we stop doing indiscriminate violence? बच्चे के गाल पे थप्पड़ मारने से पहले कब हमारा हाथ रुक जाता है और कब हमारा हाथ नहीं रुकता? Condone or initiate indiscriminate violence. ठीक है? This is the second question. And the third question is, how does our brain processes ideological information? How does our brain processes ideological information? शैम्स, तुम्हारे मोहल्ले से आज 50 किलो हीरोइन बरामद हुआ, पता तुम्हें? न्यूज मिला, सुबह का न्यूज है, नेशनल न्यूज। 50 किलो हीरोइन। सोचो कितना बड़ा कार्टेल दिल्ली के अंदर मौजूद है। 50 किलो हीरोइन का प्राइस समझ रहे हो? पूरा दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को 1 साल का तनख्वाह मिल जाएगा उससे। मतलब 50 किलो हीरोइन इज सिग्निफिकेंट मैन। दैट टू समुद्र का किनारा कितना दूर है, मींस अवे फ्रॉम पोर्ट इन दिल्ली कैपिटल सिटी यू हैव दिस। 50 kilo heroin is enough to buy 100 AK-47. You understand? हीरोइन, यहाँ कोई ड्रग एडिक्ट नहीं कि हीरोइन अफोर्ड ही नहीं कर सकता दिल्ली में। जो स्मैकी लोग होते हैं वो हीरोइन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हीरोइन किस पर्पस से है? You understand? There is a deep link between the cartel and the arms. ठीक है? Okay. Now, first of all, how does our brain responds to what? Group. The social factor. For millions of years of human existence, for millions of years of human existence, we have survived, mankind has survived only through coordinated efforts. We have survived only through coordinated efforts of small and cohesive coalitions. For millions of years of human existence, we have survived only through coordinated efforts of small and cohesive coalitions. Evolution, therefore, coalitions. Coalitions are groups. Coalitions are mutually interdependent groups. Okay? Evolution, therefore, has shaped within us a deep desire to belong to a group. Evolution, therefore, has shaped within us a deep desire to belong to a group. Therefore, group belongingness has become an instinct, human instinct.
इंसान शुरुआत से कभी अकेला नहीं रहा, कोहेसिव कोalitions में रहा, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में रहा. Man has learned, the human brain has learned that in order to survive we have to remain in group. एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बटाना, ये हम लोगों ने सीख लिया है, ये हमारा इंस्टिंक्ट है. हम लोग अकेले रह नहीं सकते, और अगर अकेले होंगे तो हम लोग we will perish, we will die. So as long as we are together we survive. Once we are apart we die. Look at the ancient stories. एक बाप के 4 बेटे थे, चारों झगड़ा करते रहते थे, चारों को एक एक लकड़ी दी, बोला तोड़ो, तोड़ दिया. 4 लकड़ी जोड़ के दिया, बोला तोड़ो, नहीं तोड़ सका. ये क्या बताता है? That if you want to survive you have to be in group. And now this has become our human instincts, that we have a deep desire to belong to a group. Now what is the missing link? What is the blank space? The blank space is the group. Now whosoever provides that membership, I am the comrade. If you provide me the membership, I am your comrade. If you provide me the membership, I am your comrade, but because I am looking for a group. So when nobody provided him the membership, it was the Al-Qaeda and ISIS who were open to provide a membership. Are you getting it? So I'm just a comrade. It's a human need. Are you getting my point? Huh? ये group ideology है. Now, today also, social belongingness remains a major psychological need. Today also, social belongingness remains a major psychological need. अगर आपको देखना है तो याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने अपने दोस्तों को फोन किया लेकिन उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया. जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, आपका फोन कोई नहीं उठा रहा है उस दिन. आपको लगेगा जिंदगी खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गया. हाँ, ये क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई. आप दुनिया भर का अंट संट व्हाट्सअप करना शुरू करेंगे. आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, ये वो है, अरे वो सामने वाला बिजी था नहीं उठाया, इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है मेरा गया ग्रुप बिलोंगिंगनेस. यू आर सो पॉजिटिव अबाउट इट. Just like when you see that money has been withdrawn from your bank account without your consent, you start calling the bank. Likewise, you start calling your friends when they don't take up your call. तो जितना आपके लिए पैसा जरूरी है उतना ही जरूरी क्या है? ग्रुप. मैं सिर्फ आपको साइकोलॉजी समझाना चाह रहा हूं. मैं परेशान हो जाता हूं अगर मेरा कोई स्टूडेंट मेरा फोन ना उठाए. ठीक है, मुझे लगता है मुझसे क्या गलती हो गई. ठीक है. So today also social belongingness continues to be a major psychological need. This psychological need is satisfied, and this psychological need is satisfied by connecting with others. And this psychological need is satisfied by connecting with others with various social identities. And this psychological need is satisfied by connecting with others with various social identities. Like group of teachers, cricket lovers. I and you are part of the same group because we love cricket. Cricket lovers. Vegetarians, or kuch nahi to vegetarians. Me and you belong to the same club because we are vegetarians. ठीक है? Indians or progressive or liberals. आजादी आजादी लिबरल्स. ठीक है, हम जेएनयू में पढ़ते तो हम लोग लिबरल. ठीक, तो लिबरल फीलिंग दैट ग्रुपीनेस. आर गेटिंग इट? तो हम लोग को ग्रुप का मेंबर बनना है, चाहे किसी भी कॉस्ट में बनना है. ठीक है, थ्रू वेरियस सोशल आइडेंटिटीज. नाउ व्हाट हैपेंस, ऑल ऑफ अस कंटेन मल्टीट्यूड.
All of us contain multitude. Multitude means multiple attitudes. Therefore, connecting with the groups, therefore, the tendency to connect with groups therefore, the tendency to connect with groups through these multitude is reflexive. Underline the word reflexive. तो हमारे पास एक एटीट्यूड नहीं होता, मल्टीपल एटीट्यूड होता है, मतलब मल्टीपल लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स होते हैं. तो जहां हमारा लाइकिंग मिल रहा है जिस ग्रुप के साथ भी, हमारे अंदर एक रिफ्लेक्सिव टेंडेंसी होता है कि उसके साथ तुरंत जुड़ जाए. फॉर एग्जाम्पल, वाओ यू आर ऑल्सो अ वेजिटेरियन. रिफ्लेक्सिव. ठीक है. So we reflexively get connected to people because we are not living a life with single attitude, we are living a life with multiple attitude. ठीक है. You are also a bike lover. इतना ही काफी है ग्रुपिनेस पैदा करने के. ठीक है. Now, just as a fraternity, team, just as a fraternity, team, club, military, just as a fraternity, team, club, military unit, or a gang, just as a fraternity, team, club, military unit, or a gang, the group provides a deep social connection with others. The group provides a deep social connection with others. Suppose you are working in police department. I'm coming to you. You are working in Kerala. You come to Delhi and you are driving and you have violated the signal and the traffic police has held you. The moment you show your card, this Delhi is none of your jurisdiction. You are working as in the state police service of Kerala. But the moment you show the I card and they come to know that you are a part of the fraternity, they don't offer you a chanal, they don't penalize you. क्यों? ऐसे तो विभागीय आदमी है. Fraternity का sense. ठीक है. Sense of fraternity. So suppose a teacher comes complaining about student. Many people will blame the teacher that you do not know how to teach the student, therefore you are complaining. But another teacher will understand because he is a part of the fraternity. Are you getting it? This is called fraternity feeling. Likewise, team, एक क्लब के मेंबर हैं, एक सोसाइटी के मेंबर हैं, एक मिलिट्री यूनिट, एक रेजिमेंट के मेंबर है, तो आप एक दूसरे का फीलिंग समझ पाएंगे. ठीक है. नाउ योर क्वेश्चन. ड्यूरिंग द Nazi, okay. I said the ideology is there, but it is bogus. The ideology was extermination. The Jew blood should not mix, it will spoil the races. Jews were seen as traitors. By Germans, Jews were seen as traitors. And the main reason why they were seen as traitors was their extraordinary talent, which made Germans jealous. ये आज का बात नहीं है, ये हिटलर की बात नहीं, ये शुरू से पौराणिक कालों से. You know, Jews used to live in temples. They were called temples. They followed Christianity and they used to live in temples like monks. Temples were like monasteries. They used to be part of the temples and these temples were protected by the king.
and the king was assisted during times of war and insurgency by these temple members. The people, the Jews who lived in temples, you know, they used to protect the other civilian Jews who were not Templars. ठीक है, ये लोग जूडो, कराटे, शाओलिन आर्ट सब में माहिर थे और उन ज्यूज को प्रोटेक्ट करते थे. लेकिन बाकी जर्मन जो है उनसे बहुत जलते थे बिकॉज दे लुक डिफरेंट, दे थॉट डिफरेंट, दे वर मोर प्रोग्रेसिव. ऑल द जीनियस इन द वर्ल्ड हैव बीन फ्रॉम ज्यू वर्ल्ड. न्यूटन ज्यू थे, आइंस्टीन ज्यू थे, सिगमंड फ्रॉइड ज्यू थे. अब बताओ ना, जितने तो तीनों पिलर साइंस का तो ज्यू था. तो इसीलिए that is why this reason, and the ideology was just eliminate the Jew race from mankind because they can be threatening to mankind. This was what was advocated by Hitler. ठीक है, extermination, इनका खून मिक्स नहीं होना चाहिए. जैसे रोहिंग्या मुस्लिम should be exterminated. अब ये कौन बोल रहा है रोहिंग्या मुस्लिम should be exterminated? Myanmar. Remember, Myanmar is a Buddhist state. Buddhism is known for non-violence, and Buddhist monks are talking about extermination. तो मैं ये कहूंगा कि religion has nothing to do with what? Terrorism or violence. It is basically human instinct. भाई आप तो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट तो शत्रु पे भी हाथ नहीं उठाता. नॉन वायलेंस आपका धर्म है, एंड यू टॉक अबाउट एक्सटर्मिनेशन. समझ में आता है? इसका मतलब रिलीजन का और वायलेंस का कोई संबंध है नहीं. देखो इंडिया में अगर बोले रोहिंग्या शुड बी एक्सटर्मिनेटेड, मुझे समझ में आता है, मोदी जी हैं, अमित शाह बैठा हुआ, बोल सकते हैं. अब बुद्धिस्ट कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं, दे आर नॉट ड्रिवन बाय एनी रिलीजियस आइडियोलॉजी, इट इज इंस्टिंक्ट. ठीक है, नाउ कमिंग टू so group can provide us with a deep social connection with others. Likewise, groups like Al-Qaeda and ISIS, can offer such social connections. Groups like Al-Qaeda and ISIS can offer such social connections. Now it appears that people who join the terror outfits are inherently violent. It appears, underline the word appears. It is not truth, it just appears. It appears that people who join terror outfits are inherently violent. ठीक है, or they join the terror outfits so that they can eat and drink together, or they join terror outfits so that they can eat and drink together. But this is not true. Individuals who are at high risk of joining terror outfits are not those who are violent by nature. Or poor. तो ऐसा नहीं कि गरीब हैं, अगर आईसिस ज्वाइन किया, अलकायदा ज्वाइन किया तो अच्छा खाने पीने को मिलेगा, या फिर बाय नेचर में वायलेंट हूं इसलिए टेरर आउटफिट ज्वाइन कर रहा हूं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स नॉट दैट दे आर इनहेरेंटली वायलेंट और दे आर पुअर. But those who join
these outfits, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, are alienated. Alienated comes from the word alien. So when you are seen as an alien, you're not accepted within the group. And as long as you're seen as alien, there is nobody like you. You are a separate species. You are a separate species. Suppose I leave you in an island which is full of insects and no human beings. How would you be treated by those insects? As an alien. And what will you feel like doing with those insects? क्या आपको दया की दृष्टि आएगी उन कीड़ों के प्रति, या आपको भय होगा? आप एक ऐसे आइलैंड में हैं जहां कोई इंसान नहीं है, कोई और जानवर नहीं, सिर्फ कीड़े। कीड़ों के लिए आप एलियन हैं। आपको खतरा है कि मैं नींद में रहूं या कि काट ना दे, किसी भी टाइम अटैक ना कर दे, तो आपके मन में क्या फीलिंग होगा? फियर होगा। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका दो रिएक्शन होगा, काश कोई और मिल जाए मुझे आइलैंड में, एक सपोर्ट, और दूसरा मौका मिले तो इन कीड़ों को मार दूंगा, और ऐसा मारने में मुझे जरा सा भी ग्लानि नहीं होगा। आई विल नॉट फील गिल्टी अबाउट किलिंग देम। सो दिस इज द कीवर्ड, एलियनेशन. This is the key word that defines why people who are normal people like you and me get motivated to join a terror outfit like ISIS or Al-Qaeda. The main thing is alienation. Okay? So what is alienation? Let us see. They are drawn towards an arrangement that can offer them camaraderie. So alienated people are drawn towards an arrangement that can offer them camaraderie. Camaraderie का मतलब होता है group with an ideology. Comrade is a member of a group who follows the same ideology like me, who provides camaraderie, brotherhood, भाईजान, ब्रदरहुड, ठीक है, एंड पर्पस ऑफ लाइफ. ठीक है, तो अगर मैं आईसिस का चीफ होता या अलकायदा का चीफ होता, तो मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश होती. आई वुड हैव फाउंड वन पर्सन who is alienated, who is looking for a camaraderie, and who doesn't have any purpose of life. तो मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो बिल्कुल अकेला हो, तन्हा हो, और जिसके जीवन का कोई लक्ष्य ना हो, जिसको आईएएस बनने की खुजली ना हुई हो. आर यू गेटिंग इट? जिसको शादी करके घर बसाने का कोई मचा ना हो. मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए. अगर मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए तो मैं उसको बम की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं. Are you getting it? So person who is looking for membership to a group and with a purpose can become a comrade. Okay? See, terrorism is a kind of Naxalism. There are many forms of Naxalism, you know. One is the rural Naxalism. These days we have urban Naxalism. JNU. ठीक है, forgive me if you are a student of JNU. ठीक है, pseudo intellectuals रहते हैं वहां. And there is religious Naxalism. In the name of religion, you are pursuing an ideology. And let me tell you, terrorism started in the world
किन्होंने टेररिज्म शुरू किया था सबसे पहले? ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म. इट डिड नॉट स्टार्टेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड. इस्लामिक वर्ल्ड तभी बच्चा है, अभी अभी तो जन्म हुआ है उसका. टेररिज्म स्टार्टेड इन आयरलैंड. The origin of terrorism comes from Irish Republican Army, IRA, who inflicted terror on Scotland Yard police to achieve freedom from Britain. ठीक है? That is the history or root of terrorism. And the ideology of terrorism was seeded by Karl Marx. ठीक है? कि Karl Marx and later on Mao Zedong, that power flows from the barrel of gun. मांगोगे तो भीख नहीं मिलेगा, छीन के लेना पड़ता है. ठीक है? This kind of ideology fuels comradeship. That is why terrorist is also known as comrade. ठीक है? So let's move ahead. हाँ. Sorry. Yeah, it's a human instinct, reflexive. If you are committed to the ideology, how can you tolerate somebody attacking it? Definitely. ठीक है भाई, मान लो आप अपने माता पिता को रेस्पेक्ट करते हैं, ये आपका आइडियोलॉजी है. किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ए बाप पे मत जाना. अरे तो बाप पे गया ना, वो एक इंडिविजुअल पे गया, आपको क्या तकलीफ हो रही है? लेकिन आपको तकलीफ इसलिए होगी बिकॉज यू सपोर्ट दैट आइडियोलॉजी. ठीक है? सो दिस हेल्प्स अंडरस्टैंड. नायक थोड़ा ठीक करो तो यार, मेरा चेहरा पूरा ठीक नहीं आ रहा है. अरे बहुत बड़ा कर दियो. नायक यार, तुमको काम खराब करने नहीं बोले. सब हंस रहे. देखो देखो उधर देखो, तुम खाली सिर्फ उधर देखो. तुम देखो उधर, उधर रिएक्शन देखो तुम. अच्छा तीन ही है, तुम लोग तीन हंस रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना. ग्रुप में हंसोगे तब पता चलेगा. This helps understand why young man. This helps understand why young man at a refugee camp. This helps understand why a young man at refugee camp, or why children from middle class immigrants, while children of middle class immigrants who feel alienated, why children of middle class immigrants who feel alienated in the host country, who feel alienated in the host country, are common recruits of ISIS. Are common recruits of ISIS. ठीक है? It also explains why regular attendance at the mosque. This also explains that why regular attendance at the mosque, which provides a strong social identity, is inversely correlated with ISIS enrollment. Why regular attendance in the mosque that provides a strong social identity is inversely correlated with ISIS enrollment. हर रोज मॉस्क कितनी बार जाते हैं मुस्लिम्स? नहीं, 5 बार नमाज पढ़ते. मॉस्क कितनी बार जाते हैं? हाँ, नॉर्मली जो नमाजी है कितना बार जाता है?
5 बार मॉस जाते हैं? नहीं, रेगुलर जो जाते हैं मेरे ख्याल से 2 बार तो जाते हैं। मैंने जितने लोगों को देखा है 2 बार तो जाते हैं, ठीक है। और जुम्मे के दिन शायद फुल टाइम जाते हैं, ठीक है। नाउ जो रेगुलर जा रहा है, आप सोचो अगर आप एक दिन भर में एक आदमी से 3 बार 2 बार मिल रहे हो, इन्होंने कहा 5 बार, मान लो 5 बार मिल रहे हो, आप समझ रहे हो कितना ग्रुपीनेस आ जाएगा। सो यू आर नोन एज अ विथ एन आइडेंटिटी इन दैट प्लेस। आपको लोग नाम से जानेंगे, लोग रोज मिलने पर दुआ सलाम करेंगे। So they are not having any feeling of alienation. They are accepted and respected members in the society. वो क्यों जाएगा आईसीस? वो अपना बसा बसाया घर छोड़ के तुम्हारे पास भटकने क्यों जाएगा? तो जाता कौन है? समझ रहे हो? रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले, जिनको एलियनेशन हो रहा है, जिनको कहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, they are the ones who go. Now this again proves that Islam has nothing to do with terrorism. जो हर रोज मॉस्क जाता है उसको टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना किसको है? जो हर रोज मॉस्क तो जाता है लेकिन उसको राजनीति भी करना है, ही हैज टू डू पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स करने के लिए कम्युनल कार्ड खेलना जरूरी है। तो खुद तो आईसिस ज्वाइन मत करो, लेकिन नौजवानों को प्रेरित करो कि आईसिस ज्वाइन करते हैं। जाकिर नायक, वो जो असाउद्दीन की कौन है उधर हैदराबाद में, हाँ ओवैसी, ये खुद क्यों नहीं ज्वाइन करता है? इन लोगों को क्यों प्रेरित करता है ज्वाइन करने के लिए? इसलिए कि खुद मॉस्क जाता है, इसकी एक आइडेंटिटी है, उसको छोड़ के नहीं जा सकता है। इसका भरा बसाया संसार है, ये क्यों छोड़ के जाएगा? है तो ह्यूमन बीइंग रे भाई। आर यू गेटिंग इट? नाउ social identity provides people with a clear path to come together. Social identity provides people with a clear path to come together. Come together. ठीक है? Social identity provides a clear path for people to come together, but our brain is not only prone to create the feeling of us. Our brain is not only prone to create the feeling of us, but also it creates the feeling of they. समझ लो इसको। जो आ गए इस ग्रुप में, अस। जो नहीं है इस ग्रुप में, दे, द इंसेक्ट्स। Would you feel guilty of killing a cockroach? Huh? Would you feel guilty of killing a baby cockroach? So indiscriminate violence. बच्चा, बूढ़ा और जवान, मेरी नजर में सब समान, क्योंकि सब पे सब कीड़े हैं, मारो इनको। I'm just trying to explain you the psychology that operates in a human being. ठीक है? और मेरे बातों को कोई दिल पे मत लेना। Don't take me as somebody who is being very bold or frank और अरे यार ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इसको बोलना ही पड़ता है, मैं क्या करूं, मेरा प्रोफेशन ऐसा है। और आपको सुनने की शक्ति लानी पड़ेगी, because you are psychologist. So anybody is a potential terrorist. Now, a classic experiment conducted by Muzaffar Sharif
known as रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट। याद है क्या था? दो ग्रुप बनाए थे, ईगल्स, रैटलर्स। 22 children were taken to a summer camp by Muzaffar Sharif, and they were divided into two groups, 11 each. One of them was named Eagle, another Rattler. Now, look at the selection of names. Eagles and rattlers are natural enemies of each other. Rattler is a snake which is hunted by eagle. Okay? And they were made to compete against each other. Eagles and rattlers were made to compete against each other, and the prejudice increased between the groups. The hatred increased between the groups to such an extent that eagles burned the flag of rattlers one day. Okay? So this explains the feeling of us versus them. हमारा पर्पस लाइफ का दूसरा है, उनका पर्पस लाइफ का दूसरा है. I can't be successful in my purpose unless I defeat them. So antithetic purposes. Antithetic purposes. A terrorist is not fighting for development. A terrorist is not fighting for employment. A terrorist is not fighting for gender equality. A terrorist is fighting for people to change their religion. Now, this is something which is my personal affair. It has nothing to do with your affair. Religion is a choice. It's a preference. अगर टेररिस्ट ये कहे कि हमें नौकरी दो, सरकार तैयार है. डेवलपमेंट दो, सरकार तैयार है. हमें बराबरी का हक दो, सरकार तैयार है. बात हो सकती है, किया जा सकता है. आप कह रहे हो अपना धर्म बदल दो, क्यों भाई? तो ये कोई डिमांड नहीं है, ये तो बहाना है. गेटिंग इट? चलो मैं अपना धर्म भी बदल देता हूं, छोड़ दोगे टेरर ना? फिर भी मारेंगे. आर यू गेटिंग इट? तो हर कोई तो टेररिस्ट नहीं हो सकता ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, सी what these groups are lacking. They have developed such a deprivation of groupiness that they are not willing to accept diversity. That is the problem. They're not willing to accept diversity. Okay? All women should be in parda. But why, yaar? It's a preference, isn't it? Now, coming to the second question. ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है. ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाउ डू आवर ब्रेन्स, how does our brain condones or initiates act of indiscriminate violence? नहीं, फिर वो नीतीश कुमार है. फिर वो किसी आइडियोलॉजी में कमिटेड नहीं. ठीक है? तो मुझे बस 1 मिनट दो, मैं इस चीज को डील करूंगा. ठीक? हाउ डज आवर ब्रेन condones or initiate violence? Just give me a minute.
it takes great deal of courage and compassion to set yourself free from the group. जैसे मैंने कोशिश की है और मैं कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा कि मैं किसी ग्रुप के साथ अपने आप को ना देखूं, ये मैं शुरू से करता रहा. So when I am in the group, I am totally committed to the group. When I am not in the group, I feel the whole world is my group. So I try to make everyone, I try to see everyone as a comrade. Okay. The only thing is, I understand the basic purpose of life of every individual. I want you also should understand this. It's happiness, nothing else. If we all are driven towards an uniform goal, unified goal of happiness, what makes me see you as a different person than me? The ways in which we derive happiness may vary, but ultimate goal of life is what? Happiness. And happiness lies in togetherness. Togetherness not only with the group members, but with the whole world. Vasudev Kutumbakam. This is the philosophy that actually should drive human life. And this is the motto of Vedanta. Okay? So, why hatred? Why hatred should have any place? If you can see the whole world as us, then why to limit yourself in a group with a distinct identity? How about feeling like us with everyone? ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को खांचे में डाल लेते हैं. मैं लॉयर हूँ, वो दूसरे प्रोफेशन में, वो ये है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है. अपने आप को छोटा करना. You are limiting your ambit within a confined group. That means you are not a person who has evolved totally in personality. ठीक है. आप पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल को प्यार करना बहुत आसान है. ठीक है. क्योंकि आप प्यार किस चीज से कर रहे हैं? एक मुंडी से कर रहे हैं, दो आंखों से कर रहे हैं, एक नाक से कर रहे हैं, एक होंठ से कर रहे हैं. बहुत आसान है. 1000 मुंडी, 2000 आंखें. यू जस्ट इमेजिन, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है वो सबसे प्रेम करता है. ठीक है. और लोग उसे बेवफा कहते हैं. दिस इज द आयरनी. पीपल कॉल हिम डिसलॉयल. मैं अपना दुखता हुआ किस्सा आपके सामने रख रहा हूं. तो मैं जब किसी से बात करता हूं ना, तो मैं समय का मुझे ज्ञान नहीं होता. अगर मैं बात कर रहा हूं तो बात करता जाता हूं और मेरे परिवार को लगता है क्या बात है. ठीक है. क्या बात है, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है ये आदमी? अरे यार, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम हो. ये तो समय का चक्र है ना कि मैं तुमसे बंध गया. अगर तुमसे नहीं बनता तो मैं खुला सांड होता. पूरा जगत मेरे लिए होता है. यू अंडरस्टैंड? इट्स सो सेल्फिश टू कन्फाइन एन इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप. एनीवेज, छोड़ो. So, how does our brain condones or initiate violence? The mental events associated with us versus them. The mental events associated with us versus them are likely to be present in unconscious. The mental events associated with us versus them are likely to be present in unconscious. And hence are difficult to be assessed, and hence are difficult to be assessed by self-report inventories. So self-report inventories can allow you to answer questions about information present in conscious mind. But if the information is present in subconscious mind or unconscious mind, you cannot report against a questionnaire. That is self-report inventory. Okay, they cannot be assessed through self-report inventory. Now, what is the choice as a psychologist? आप कैसे करेंगे जो unconscious में, उसको कैसे dig out करेंगे? Forget about Sigmund Freud's projective methods. अगर projective test भी नहीं हो, scientific test क्या होगा unconscious को जानने का?
brain imaging technique to know about unconscious desire for us versus them. अगर किसी का निकालना हो तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी से नहीं निकलेगा, हमें ब्रेन इमेजिंग करना होगा, which is called न्यूरो इमेजरी, right? Therefore, psychologists have used neuro imaging techniques to identify if there is a correlation. Therefore, psychologists have used neuro imaging techniques to identify if there is a correlation between anti-black attitude if there is a correlation between anti-black attitude and neural bias. If there is a correlation between anti-black attitude and neural bias in the white participants, ठीक है? मैं अपना एक एडमिट करता हूं आपको, ठीक है? मैंने कोई न्यूरो इमेजिंग टेक्निक से नहीं जाना है, लेकिन मैंने जाना है बहुत गहन रिसर्च करने के बाद मैं एंड में आपको बताऊंगा मैंने क्या देखा है. आई ऑल्सो हैव बायस, आई एम ऑल्सो प्रेजुडाइज्ड. अब मैं आपको बताऊंगा मेरा प्रेजुडिस क्या है, एंड में बताऊंगा. इट विल बी अ कैंडिड कन्फेशन. आप भी प्रेजुडिस्ड हो लेकिन आप देखना नहीं चाहते, मैंने देखा है, ठीक है? एनीवेज, लेट अस सी. When white subjects were shown photographs of black faces, when white subjects were shown the photographs of black faces, they reported increased activities in the amygdala. They reported increased activity in the amygdala, which is responsible for producing fear emotion. AMYGDELA. They reported increased activity in the amygdala. Amygdala is present in the brain that produces fear emotion, anger emotion. ठीक है? Fear and anger are produced by amygdala. So when white people see blacks, they feel fear without any reason. This is called neural bias. And this is anti-black attitude that is not present in their conscious. So consciously, if you ask them, do you really hate black people? No. We are not prejudiced. For us, all are equal. But deep inside, in the unconscious, there is increased activity of fear and anger when they see black photographs. उनको लगता है कि या तो मेरा ये पर्स मार लेगा, चाहे मेरा चेन छीन लेगा, क्योंकि वो गरीब लोग थे, स्लेव थे, उनको लाया गया था अमेरिका में, तो वो गलियों में रहते थे, गली बॉय थे. तो रात के टाइम में कोई अंग्रेज, कोई सफेद अगर गलियों से गुजरे तो ये चेन छीन लेते थे, चाकू दिखा के पैसा लूट लेते थे. तो वो फियर एलिमेंट इंड्यूस हो गया. कहां हो गया? अनकॉन्शियस. ये तो अमेरिकन्स हैव सीन अ चेंज व्हेन अ ब्लैक बिकेम द प्रेसिडेंट. इट वाज जस्ट मतलब, एंड राइट नाउ वाइस प्रेसिडेंट इज एन इंडियन. ठीक है? ओके. So amygdala is the region of brain that produces fear and anger. The strength of anti-black attitude is directly proportional. The strength of anti-black attitude is directly proportional to the activity in amygdala.
Anti-black attitude is directly proportional to the activity in amygdala. ठीक है? Therefore, when white participants confront black Americans, or you can say when white Americans confront black Americans, an automatic fear is experienced about which the individual is unaware, or about which the individual is unaware for the reasons ठीक है, and hence they do not condone violence, and hence they do not condone violence. ठीक है? Now a case study was done by Zaki et al. Zaki et al. Found that even the emotion of trust is affected by us versus them feeling. He organized economic investment games. With in-group members belonging to own school, जो मेरे खुद के स्कूल के दोस्त थे वो इन ग्रुप हो गए, and out group members belonging to other school. Economic investment game like Monopoly. खेला है Monopoly? हिंदी में जिसको व्यापारी बोलते हैं. बोर्ड गेम है जिसमें कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है कितना पैसा लगाना है. ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग गेम होता है. Have you played Monopoly? Okay. Now such kind of game were arranged in which you have to play with in-group members as well as out-group members. While they were playing these games, neuroimaging was done. While the subjects played the game, neuroimaging was done. And it was found that trusting the in-group members resulted in higher activity in the region of pleasure in brain. Trusting in-group members resulted in increased activity in the region of pleasure in the brain. So when you make joint investment with in-group member, the region of brain that gets activated is the region of pleasure, that is responsible for giving you pleasure and happiness. While trusting the out-group member, which means when you are investing with the out-group member, while trusting the out-group member results in increased activity in the brain that is associated with cognitive effort. While trusting the out-group member results in increased activity in the brain that is associated with cognitive efforts and withholding.
तो जब मैं इन्वेस्टमेंट किसी अदर स्कूल के बच्चे के साथ करना चाह रहा हूं उस गेम में, तो मेरे ब्रेन में एक हिस्सा बहुत गतिविधि में आ जाता है. One of the region of brain gets activated which is responsible for withholding or making cognitive effort. रुक जाओ, reassess the situation. Before making the investment, reassess the situation. So this cognitive effort is done to reassess the situation. ठीक है. So trust भी इन ग्रुप के लिए ज्यादा होता है, आउट ग्रुप के लिए कम होता है. न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हैव प्रूवन दिस. ठीक है. तो अगर आप टेररिस्ट नहीं है तो आपको मेरी बातें समझ में आएगी, आप मुझ पे ट्रस्ट करेंगे जो मैं बोल रहा हूं. लेकिन अगर आप टेररिस्ट है, मेरे कहे हुए किसी भी बात पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेन तो दूसरे टाइप से चल रहा है. नाउ आई टोल्ड यू दैट आई विल टेल यू व्हाट इज माय प्रेजुडिस व्हिच आई डिस्कवर्ड ऑफ लेट. आई अनकंडीशनली एक्सेप्ट एवरीबॉडी. ठीक है. बट व्हाट आई सॉ दैट आई लैक टॉलरेंस टुवर्ड्स साउथ इंडियन मूवीज. ये मुझे नहीं पता था. मुझे लगता था कि मुझे तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मैंने देखा ना, ये बर्दाश्त नहीं है. एंड स्पेशली व्हेन पीपल टेक प्राइड इन साउथ इंडियन मूवीज, आई फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड. एंड दे वुड से मूवी अगर बनता तो साउथ में बनता, और कहीं बनता ही नहीं. ये लगता है सत्यजीत रे को कभी देखा नहीं क्या. तो बड़ा अजीब लगता है. एंड दैट इज माय न्यूरल बायस. I don't understand how is it possible that I enjoy the food you eat, but I don't enjoy the movie you watch. This is because of that unconscious hatred. Unconscious hatred. वो मैं अवेयरनेस में नहीं है. भाई मुझे इडली डोसा खाने में तो अच्छा लगता है, सिनेमा उनका क्यों नहीं अच्छा लगता है. ये वही सिनेमा के मामले में उनका क्यों हो जाता है. Why I disassociate myself with South Indian movies? I do not stand defending them. It is because of that neural bias. I am not saying that the South Indian movies are bad. There must be something extremely good which I am not able to see. This is my weakness. This is my weakness, that I am not able to admire and appreciate a particular perspective. ठीक है. लेकिन न्यूरल बायस है. तो जब न्यूरल बायस है, when we talk about important decision, when we discuss with friends about important decision, I take the final word from a North Indian. ये तो दक्षिण भारतीय तो ऐसे ही बोलेगा. ठीक है. ये मेरा न्यूरल बायस एंड अ कैंडिड कन्वर्सेशन. मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन आजकल मुझे रियलाइज हो रहा है. तो मैं आखिरी सजेशन जो होता है ना किसी नॉर्थ इंडियन से लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा बुद्धिमान है. जबकि history has been witnessed that intellectuals have always come from southern part of this country. Still I see Buddha in our North Indian, not in the South Indian. Okay. So my brain is predisposed to see Buddha, but my brain is not predisposed to see Shankaracharya. Are you getting my point? Everybody has some or the other kind of neural bias. I have discovered mine, you have to discover yours. मुझे तो पता चल गया मैं किस चीज से बायस्ड हूं. आपको पता है आप किस चीज से बायस्ड है? शायद अभी तक नहीं है, लेकिन कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. वो अनकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाएगा. अभी तो आपका उम्र ही क्या है, अभी तो आपने जिंदगी शुरू किया है. आंखें खोली है अभी, ऐसा आंख खोल के देख रहे हैं. सोनीपत में आंख खोलता है, दिल्ली में सोनीपत में ट्रेन में बैठा, दिल्ली में आ गया. 60 किलोमीटर एवरी डे इज कम्यूटिंग. ग्रेट. वापस जाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटा. माय गुडनेस. फिर तो तुम एकदम निचोड़ा हुआ नींबू बन जाते हो घर जाके. थक जाते हो. Many of my friends are from Sonipat. सी भांति भांति का कल्चर होता है. मेरे फ्रेंड के फादर एक्सपायर कर गए थे, तो हम लोग गए थे अंतिम यात्रा. I saw in Sonipat that people don't use wood to burn the body. They use cow dung cakes and hay. Hay मतलब वो जो
हाँ, तो पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा। आई थॉट दैट ओके, देखो कितना तरह का मतलब कल्चर है हमारे इंडिया में। या यू आर आस्किंग समथिंग? हाँ, इफ यू कैन गेट रीड ऑफ दैट अनकॉन्शियस बायस, then definitely then definitely you can change, but it is very difficult if you fall in trap with those bias. अगर मुझे एक सेंसिबल साउथ इंडियन मूवी दिख जाए ना, तो मेरा ओपिनियन तुरंत बदल जाएगा, वो बायस खत्म हो जाएगा. दैट बायस विल वीकन अप. I saw a great movie from southern India way back when I was quite young. नायकन, कमल हसन की मूवी थी, जिसपे एक बॉलीवुड मूवी दयावान भी बनी थी. I found it extremely good movie. I saw another South Indian movie, Sadma, Kamal Hassan and Sridevi. It was extremely good movie. But when I see movies like KGF, RRR, I feel deep hatred. ठीक है, तो I am waiting for that day when I can see a realistic movie. ठीक है, तो anyways, हाँ, somebody told me that Malayalam movies make more sense. They make more sense. But then the person who said Malayalam movie makes sense, he said that Malayalam movie alone makes sense. That again triggered my neural bias. In group. No, they will feel that the individual is deceiver. They will not feel the group as a whole is a deceiver. So they will find the fault in the individual if he is an in-group member. But if you are deceived by an out-group member, you will attribute the fault to the whole group rather than the individual. This is the difference. So difference is, in-group, every person is unique. In out-group, all are alike. Us versus them. ठीक है? Who? Sorry? Sleeper cells are not terrorists. They are paid employees. They are paid employed. They are working as regular worker. They don't have any ideology. They don't have any mission. They are said that you will receive a monthly payment that will ensure your survival. आपको हर महीने इतना पैसा मिल जाएगा ताकि आप अपना कमरे का किराया दे सके, खाना पीना खा सके, काम हो ना हो आप भूखे नहीं मरेंगे. बदले में आपको सिर्फ डिलीवरी देनी, अगर जरूरत पड़े तो. क्या डिलीवर करना उनको खुद नहीं मालूम है, किसका माल किसको पहुंचाना उनको खुद नहीं मालूम है. उनको बोला गया ये पैकेट वहां से उठाओ और मुंबई सेंट्रल में छोड़ के आ जाओ. वो पैकेट में बम है कि आरडीएक्स है उनको नहीं पता है, वो जाके छोड़ के आए. वो टेररिस्ट नहीं है. टेररिस्ट हैड टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड दे मस्ट फॉलो अ आइडियोलॉजी. इसलिए स्लीपर सेल का पता लगाना या उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. ना तो कोई हिस्ट्री है, ना कोई मोटिव दिखता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको स्लीपर सेल बनाने की रोज कोशिश होती है, पता है आपको. आपके मोबाइल पे मैसेज आता होगा, घर बैठे बैठे यू कैन अर्न 25,000 रुपीज अ मंथ, 50,000 रुपीज अ मंथ. ये सब क्या है? कोई घर बैठे बैठे आपको नहीं देगा पैसा. दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट यू एंड फिश यू. इसको कहते हैं फिशिंग. इंटरनेट के लैंग्वेज में, साइबर सिक्योरिटी के लैंग्वेज में इसको फिशिंग कहते हैं. दे आर ट्राइंग टू फिश यू सो दैट यू बिकम अ मेंबर ऑफ स्लीपर सेल. घर बैठे बैठे आपको एक तुच्छा सा काम देगा, आपको लगेगा इस काम के मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उस काम का पैसा नहीं मिलेगा. अचानक एक दिन बोलेगा नेक्स्ट पेमेंट विल कम ओनली व्हेन यू डू दिस. नाउ यू आर एडिक्टेड टू दैट पेमेंट. यू विल डू दैट when you see that there is no risk involved. You will do that because you don't have any history. Nobody will suspect you. करना क्या है? एक पैकेट यहां से लेके वहां पहुंचा देना है, इतना ही तो करना है, कर देगा. हाँ हाँ, उसके बाद तो once you are into that and you are start realizing, then you become either supporter or you detach yourself. ठीक है. Now in group trust comes easily.
In group trust comes easily, but out group trusting an out group member comes with efforts. In group trust comes easily, but trusting the out group member comes with effort. ठीक है? So in the evening, I will tell you about the genetic legacy that we are carrying forward. And in the evening, we will complete terrorism and we are going to start with sports. ठीक है? अभी देखो मैं आपको इन ग्रुप आउट ग्रुप का बताता हूँ. उस दिन उन्होंने फोटो लिया. किसी ने बाहर से एक स्टूडेंट को बुलाया जो कि नेक्स्ट क्लास का था. वो कैमरा लेके फोटो लिया. मैं जब उसको देखा ना तो मैंने देखा कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग उसको देख रहे कि ये है कौन बंदा, क्योंकि उस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि ये कौन है भाई. ठीक है ना, तो हमारे स्टाफ का कोई मामला देखा ही नहीं, आप कौन बुला के लाया उसको पता नहीं, लेकिन जब उसने फोटो लिया तो लगा चलो ही इज ऑल्सो स्टूडेंट. लेकिन एक इन ग्रुप आउट ग्रुप फीलिंग हमेशा इनसाइट हो जाता है द मोमेंट यू सी अ पर्सन हु लुक्स लाइक एन एलियन. Although he is a human being, but he looks like an alien because he is not a member of my group. This is a human reflex. The problem is this is a human reflex. ठीक है? आप सोचो ना, आपके घर में अगर कुछ गेस्ट आ जाए तो आपको अनकंफर्टेबल अनइजीनेस क्यों होता है? आफ्टर ऑल वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है. हाँ, क्योंकि लगता है ये तो आउट ग्रुप है. ठीक है? यस, हाँ हाँ पूछो. हिंसा कर रहे हैं. हाँ, उसका रीजन स्ट्रेस है. उसका रीजन सिंपल है, दे आर डीलिंग विथ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस. और कौन से सोल्जर? स्पेशली द पैरामिलिट्री, नॉट द मिलिट्री. पैरामिलिट्री हु आर एंगेज्ड इन इंटरनल लाइट कॉम्बैट, दे आर अंडर इमेंस स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, जो फौज बॉर्डर पे है वो हमेशा एक्शन में है, उसको स्ट्रेस नहीं है, वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहा है. लेकिन आपने कभी सोचा है CISF ऑफिशियल्स हु आर गार्डिंग द इंडस्ट्रीज एंड एयरपोर्ट्स, उनको दिन भर क्या काम है? उनको कोई एक्शन का मौका नहीं मिल रहा है. वो बंदूक लेके खड़ा है लेकिन उसको एक्शन का मौका नहीं है. उसको करना क्या, सिर्फ चेक करना है और सबको ठप्पा लगाना है. तो वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है. A soldier in uniform needs to fight. When they don't get that opportunity, they get frustrated. और बोर्डम बहुत होता है. हाँ, इसका तोड़ कुछ नहीं है. इनको काउंसलिंग की जरूरत है, इनको मेडिटेशन की जरूरत है. दे नीड टू बी गिवन जॉब शिफ्ट्स एंड जॉब रोटेशन. अटेंशन लैप्स होता है इनका. सोचो ना, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ हैदराबाद एयरपोर्ट कितना बड़ा एयरपोर्ट है. They handle 9,000 ट्रैफिक एवरी डे. 9,000 लोगों को चेक करना हो अगर तुम्हें, और कोई एक्शन नहीं है उसमें. वही एक काम, वहां एक्सरे मशीन में आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं और 1,000 आदमी को देख रहे हैं. मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. दैट इज द रीजन. ठीक है? फौज में कहां होता है? फौजी एक्शन में. पुलिस में कहां होता है? पुलिस एक्शन में है. ये तो बेचारे CISF वाले आराम का नौकरी के लिए. पैरामिलिट्री देखो 4 तरह का होता है. SSB होता है, BSF होता है, CRPF होता है, CISF होता है और एक 5वां ITBP होता है. सबसे मुश्किल काम ITBP का होता है, उसके बाद CISF का होता है. तो जब चॉइस मिलता है ना कि आप एसिस्टेंट कमांडेंट किसमें बनना चाहते हैं, तो वो CISF ज्यादातर लोग चूज करते हैं क्योंकि वो आराम का नौकरी है. लेकिन वो आराम का नौकरी फ्रस्ट्रेटिंग भी उतना ही होता है. ठीक है? अब देखो, CISF का जो डिप्टी कमांडेंट होता है वो प्रेसिडेंट के गार्ड में होता है. लेकिन हर एक को तो प्रेसिडेंट का गार्ड नहीं मिलेगा ना. बाकी लोग तो एयरपोर्ट में तैनात रहेंगे और उनका कोई काम ही नहीं है. उस एयरपोर्ट के बाउंड्री के आहत के बाहर तुम्हारा कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं. ठीक है? सो दिस इज इट. ऊपर से इनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है. हाँ, मैं बना चुका हूं. मैं मुंबई एयरपोर्ट में मैं गया लाइटर लेके, उसने मुझे पूरा चेक किया, बोला नहीं
जाइए, स्टैंप भी लगा दिया। मैं फिर से वापस गया, दिल्ली की फ्लाइट थी 1 घंटे बाद। मैंने पूछा आर यू श्योर? बोला हाँ हाँ चेक कर लिया सर, आप जाइए। मैंने कहा एक बार और देख लो यार, तो उसने फिर से चेक किया, बोला हाँ जाइए। मैंने क्या किया था, ये जो बेल्ट होता है ना मेटल, यहाँ पे जब मशीन लगाता है ये मेटल टॉ टॉ करता है, मैंने ठीक इस मेटल के नीचे लाइटर डाल रखा था। मैंने उसको निकाल के दे दिया, तो उसका ना आंख इतना बड़ा बड़ा हो गया। बोला सर आपकी फ्लाइट कितने बजे? मैंने कहा 1 घंटे बाद है। तो वो मुझे वहां पे जेट एयरवेज का रेस्टोरेंट कम बार था, वहां ले गया, मुझे बियर शेयर पिलाया अपने खर्चे पे। बोला सर आपने बहुत बड़ा सबक दे दिया। हमने थैंक यू। तो मैंने देखा कि वो क्यों इतना सेलिब्रेट कर रहा था, बिकॉज मैं थोड़ा एक्शन लेके आया उसके लाइफ में। मतलब मेटल अगर बज रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेटल है, वहां पे लाइटर भी हो सकता है। आर गेटिंग इट? एनीवेज, मैंने टेक्निक बता दिया हाउ टू कैरी लाइटर इन फ्लाइट। But nowadays they ask you to, yeah, that is why they ask you to untie the belt. You're correct. पानी क्यों नहीं ले जाने देते? क्योंकि पानी की जगह आप वोदका कैरी कर सकते हैं। इट कैन बी एन अल्कोहलिक बेवरेज। अगर आप पानी कैरी कर रहे हैं तो बोलेगा पी के दिखाओ।